अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आज हम बनाएंगे कीमा आलू मटर। देखें हम कैसे बनाते हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये हम आपको दिखाएंगे और बनाएंगे। आग हमारी जल गई है, बड़ी मुश्किल से जली है लेकिन जल तो गई है। अब इसके ऊपर हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे और आओ देखें, हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स हमने लगाए हैं बनाने के लिए। देखें, थोड़ा सा तेल लिया है हमने, ऑलिव ऑयल, वर्जिन का ऑलिव ऑयल। कीमा है, ये चिकन का कीमा है। ये लहसुन और अदरक कुटा हुआ, बारीक कटा हुआ। ये हरी मिर्च है और ये हरी मिर्च को काटा नहीं है, ये बाद में हम डालेंगे ऊपर ताकि ये नाइस खुशबू सी आए हमारी करी में से। ये है प्याज प्याज, थोड़े से टमाटर लिए हैं, कश्मीरी मिर्च लिए है, धनिया लिया है, पानी इसके बनाने के लिए, मटर लिए है और आलू को भिगो दिया है। थोड़ी देर इसकी स्टार्च जो है वो निकल जाती है। अब हमारी आग तो सही चल रही है, तो हम पहले थोड़ा सा तेल डालते हैं और उसके ऊपर फिर हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करते हैं। So I'm going to add some zeera by 1 spoon. अब इसी में हम अदरक और लहसुन डाल देंगे ताकि ये भी थोड़ा सा कुक हो जाए। गार्लिक, जिंजर, इसकी थोड़ी सी फिर the rawness, you gotta cook the rawness away from the garlic and ginger. इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज जो है वो पानी छोड़ दें। प्याज अभी ब्राउन हो गए हैं सही तरह से। They're cooked quite well. Garlic and ginger's cooked quite well. I'm now going to add the keema. This is chicken mince, chicken keema.
इसको mix this up a wee bit, and I'm going to just put a lid on it just to let this slowly cook away. Get all the mince oiled up, and then I'll put a lid on it. अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं and just let this प्याज cook away. A little bit of water. Just cover this up again for a few minutes. I'm going to add the rest of this oil in as well. Just a little bit more oil. Now I'm just going to cover it up for another few minutes, just so that the mince can cook properly and प्याज भी थोड़े जे ख़त्म हो जाए. हरी मिर्च, लाल मिर्च थी ये, हरी मिर्च नहीं. This is a crushed red chilli, grinded, a little bit of Kashmiri mirch. This is red, gives a nice colour to the whole thing. Dry coriander, a little bit of black pepper, some salt, some haldi, let's mix it up a bit more. Okay, I'm going to add these things now. So first of all, I'm going to throw in the tomatoes, hari mirch, आलू the प्याज पानी सी थोड़ा सा, I'm going to take this water out. I'm going to add the potatoes. Mashallah, mashallah, look at the colour. Come close and look at this colour. This is the Keema Aloo tomato
And then I'm just going to let this cook with the lid on so that the potatoes can cook nicely. And here थोड़ा सा धनिया डालते हैं. This would be nice, and I'll add some more after. Green pepper, shimla mirch, पीछे रह गए ये मटर. Mutton I'm going to add right at the end because otherwise they'll get mushed up, so I'm just going to add them right at the end. I'll put some of these long mirch in as well, and now I'm just going to put the lid on and just let this cook under slow heat for a little while. So that the pyaz, the potatoes cook in the heat. Butter I'm going to add near the end. So I'm just going to leave this for a while. It's cooking away nicely. I'm just going to give this a wee taste to see if the masala and things are all okay. Zabardast. Very nice. Okay, थोड़ी देर ये पक गए हैं. The alus are nearly done, so I'm now going to add these mutton. Didn't want these to mush up too much, so बिल्कुल आराम से मटर को डालना है ताकि ये मश अप ना हो. Cheers. अच्छा जी, तकरीबन it's just about done. Come and have a look. Just look at the colors that you see. Masala सारा ready है. आलू भी ready ने. So I am just going to add a little bit more dhania on top. Fresh dhania. This will give it a nice taste, and then just take it out from the karahi.
अंदर रोटियां पक रही पियां ने साडियां ते हांडी भी पक गई है। हुण जाके खाने आ। बच्चे इंतज़ार कर रहे पे ने खाने का। ते देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना नाइस खाना बनया है। ते बनाया भी है लकड़ां ते। लो जी लो जी इनू कहंदे ने आलू कीमा कीमा आलू मटर ते कश्मीरी मिर्च। ते असमतुल्ला नू दो इजाज़त। हुण मैं जा रहा खाना खान बच्चों दे नाल ते इंशाल्लाह फिर मिलांगे अगले वीडियो दे नाल। अल्लाह हाफिज़।